आज हमारे स्टूडियो में एक काफ़ी किस्म की गेस्ट हैं। IBA ग्रेजुएट के साथ साथ आपने स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट किया which turned into one of the biggest or leading event planning called as 360 events. कैसे आइडिया आया 360 इवेंट्स का? बैंड बाजा बारात का कोई पार्ट था इसमें? वो मूवी देख के ऑलमोस्ट 100 को हो गया था कि मुझे इवेंट प्लानर बनना है। हाउ हार्ड वाज इट टू गेट इनटू IBA? बिकॉज़ एक परसेप्शन ये है कि भाई IBA में जाना तो बहुत मुश्किल है। बिकॉज कोविड टाइम से हमें बहुत ज्यादा बिजनेस हमारा सबका ही इम्पैक्ट हिट हुआ था, बट इवेंट प्लानिंग वाज ऑफ कोर्स द टॉप मोस्ट। बट इवेंट प्लानिंग इज लाइक दैट honestly, so I'll tell you कि ये बहुत different process है। So ये नहीं है कि आपको अच्छा ये शर्ट अच्छी लग रही है, कितने की है, बता दो, you know। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट। आज जो मेरा हुलिया है वो कतन ये बुक पढ़ने के बाद नहीं है। गालिब मिर्ज़ा गालिब की बुक है, इसका नाम है अलिफ से ये तक गालिब। मैं हम जस्ट अंडर द वेदर, मुझे थोड़ी सर्दी लग गई है इस गर्मी के मौसम में भी, तो इस वजह से मुझे शॉल वॉल लेनी पड़ी। आज हमारे स्टूडियो में एक काफ़ी मुनफरद किस्म की गेस्ट मौजूद हैं। IBA ग्रेजुएट के साथ साथ आपने स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट किया which turned into one of the biggest or leading event planning organization of Karachi. It's called as 360 events. मेरी मुराद मिस ऐमन ताहिर से। कैसी हैं आप? Good, thank you. कैसा लगा आपको यहाँ पे हमारा स्टूडियो? Really good, really nice. Yes. So Aiman, let's talk us through your journey के क्या कैसे स्टार्ट किया है, कैसे आइडिया आया 360 इवेंट्स का? बैंड बाजा बारात का कोई पार्ट था इसमें? क्योंकि वो मूवी देख के ऑलमोस्ट 100 को हो गया था कि मुझे इवेंट प्लानर बनना है। वो क्या बैंड बाजा बारात, I think it came like really late. पहले से करती थी। It was just a very spontaneous random thought honestly. So हमने जो है वो I was in IBA. How hard was it to get into IBA? Because एक परसेप्शन ये है कि भाई IBA में जाना तो बहुत मुश्किल है। How did you get into IBA? So maybe like for me probably like it wasn't that hard because I was a very like studious sort of a So you're a nerd. So but like so I was just a straight A getter and all. So for me it was easy. It wasn't that hard. Okay. I mean, of course, like not taking away from it. Of course, for some people, I'm sure hard hoga. But yeah, it wasn't that hard. So I was in IBA. It was just like, of course, different classrooms and different subjects out there. So there was this subject, small scale business management. उसमें there was a project जिसमें हमें ये करना था एक कोई भी business idea, very small scale again, just to understand the concept of small scale business management. So of course initially it wasn't like an event planning service. We started off with I actually. So मेरा ये idea था कि I'm gonna like start off with something that's not something like readily available in the market. So मैंने LED glow balloons वहाँ से start किया. पेपर लैंटर्न्स उस वक्त होते थे, इतने आई एम नॉट श्योर इतने कॉमन नहीं थे। ऐसी छोटी छोटी चीजें, प्रॉप्स, कस्टमाइज्ड प्रॉप्स, सो वो सब चीजें हम बाहर देखते थे ऑफ कोर्स। वहाँ पे sorry, I want to cut you off. The first paper lantern that I got or I saw in real life was through you. उस जमाने में इनकी कंपनी का नाम होता था मूवी सेलिब्रेशंस, राइट? तो वो आपने IBA में एस्टैब्लिश की फिर? एग्जैक्टली। सो वो बिल्कुल लाइक सर्विस तो नहीं था, ऑफ कोर्स आई वाज वेरी यंग टू, और इतना एक्सपोजर नहीं था एंड ऑल। Throughout like my life, I was very like studious, like I told you before also. So, but O levels, A levels, so पहले schooling, and then I got into IBA. So, as such, like इतना client dealing and all नहीं पता थी and all. So it was like a very like random thought कि चलो let's just do this. I also had like a group of friends, group project था, तो उसमें हमने start किया. It actually turned out really good because again वो एक idea था जो click हो गया, because again like you said इतने sky lanterns, paper lanterns या ग्लो बलून्स का कांसेप्ट नहीं था। हमने डिज्नी मूवीज में देखे थे, वो हमने रियल लाइफ में तो कभी नहीं देखे थे। Yeah, so pretty much like that only. So I still remember उसके बाद आने लगे like चाइना से import होने लगे। So the very interesting fact जो शायद नहीं पता होगा किसी को भी, so वो जो ग्लो बलून्स भी होते थे वो मैं खुद से like यहाँ पर उनको प्रॉपर्ली like खुद से बनाना और खुद से हर चीज करवाना, सो वो करवाते थे। एंड देन लाइक दे वर इन लाइक कि भाई आपने मंगवा लिए मार्केट से लेके बेच दिया ना।
So वो बड़ा like customized था. Even जो props थे, for that matter, props भी of course वो खुद से करना, of course like इस तरह से start किया. And then of course फिर gradually and all clients ने बोला खुद से, university students पहले थे of course, फिर उसके बाद university में since IBA में बहुत events होते थे. So फिर एक event आया, चलो थोड़ा ये part कर लो, फिर started off with bit of balloons, balloons कर लो, फिर then of course so on so forth, चलो florals में गए, then alhamdulillah wedding में आए, फिर wedding के साथ साथ फिर of course parties and all, and now alhamdulillah it's like but basically जो first कह लो कि आया आपको order के लिए जो भी कहते हैं वो birthday का आया जो पहला आया था, अच्छा 2014 में मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली, सो आई थिंक 10 years तो उसको हो चुके हैं. सो मेरा जो पहला था एग्जैक्टली वो था, आई थिंक इट्स अ बिट हार्ड टू रिमेंबर अभी, लेकिन आई थिंक ब्राइडल शावर था. या इट वाज अ ब्राइडल शावर. यस, ये अब वेस्टर्न सोसाइटी को हम चाहे जितना ही बुरा भला बोले, लेकिन उससे जो हमने चीजें अडॉप्ट की ना वो फायदेमंद बहुत से लोगों के लिए हुई. बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज खुल गई. ब्राइडल शावर हो गया, बेबी शावर हो गया, जेंडर रिवील हो गया, एवरीथिंग पूरे इवेंट्स हो जाते हैं. यस. सो like एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था, ऑनेस्टली मेरे कंपेटिटर्स यहाँ पे बहुत कम थे. सो ऑल्दो मेरा इतना like I didn't started like very big scale के फॉरेन शायद prominent हो जाती whatever. So it was very small scale. But जब मैंने स्टार्ट किया था कराची में उससे कोई ऐसा कस्टमाइजेशन पे काम नहीं हो रहा था. सो बेबी शावर्स, ब्राइडल शावर्स, बर्थडेज, कस्टम बर्थडेज होती थी, बर्थडेज एंड ऑल, बट इतना कस्टमाइजेशन वाज नॉट बीइंग डन हियर. बट खैर अब when I look at the market, I see a lot of girls, young girls, काफी इवेंट प्लानर्स हैं, लेडीज इवेंट प्लानर्स हैं जो अब इसमें काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. ऑफ कोर्स लाइक कुछ मुझसे पहले से भी बहुत कर रहे थे, बट उनका जो फोटे था वो जस्ट weddings, शादी का. So but alhamdulillah, like I think God's been kind और अच्छा. So एक जनरल सवाल जो ऑलमोस्ट जो भी हमारे लिसनर्स होंगे, व्यूअर्स होंगे, उनके दिमाग में होगा, you did not require a very large amount of investment, right? अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से स्टार्ट किया और छोटे से तो हर कोई ये चीज करना चाहता है. तो what would you tell them कि what's the secret? अब तो मार्केट माशाल्लाह बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुकी है, राइट? यस. तो अब अगर किसी ने स्टार्ट करना है, इमेजिन यू स्टार्टिंग योरसेल्फ राइट नाउ. अच्छा, अगर अभी मैं इस पॉइंट इन टाइम पे होती तो मैं कभी स्टार्ट नहीं करती, बिकॉज ये अभी पाकिस्तान में ये जो इवेंट प्लानिंग मार्केट है, इट्स वेरी सैचुरेटेड, लाइक यू सेड, बहुत कंपेटिटिव हो गई है. एंड ऑनेस्टली अब सिंस मैंने इतना काम यहाँ पे कर लिया है, इतना काफी एक्सपीरियंस हो गया इसको करते करते, उस वक्त एक अलग था ऑफ कोर्स. अब यहाँ पे आपको पाकिस्तान में इतनी वेडिंग्स का व्हाट डू यू से, इसको इतना ना बजट्स भी नहीं हो रहे आजकल की सिचुएशन पे, जो महंगाई के ज्यादा तो है. यस. सो जो पुराने, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा इतना एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, सो आई हैव लाइक नाइस क्लाइंट्स विद मी. अगर मैं अभी स्टार्ट करती तो मुझे जिस तरह के क्लाइंट मिलते हैं, जिस तरह के इवेंट्स मिलते हैं, सो प्रॉब्लम मेरे लिए थोड़ा डिस्करेजिंग होता है. गेट माय पॉइंट? बिकॉज अगेन लाइक वो स्केल ऑफ इवेंट्स इतने नहीं है, फिर इतने इवेंट्स भी नहीं होते. पीपल ऑफ कोर्स हैव नाउ गॉन लाइक वेरी इन टर्म्स ऑफ इंटिमेट, इन टर्म्स ऑफ देयर गैदरिंग्स आल्सो. यू नो, पहले होते थे कि आपने इतने 200 300 500 1000 2000 की शादियां भी होती है ऑल दैट. बट नाउ लाइक आई थिंक बहुत ये अच्छा भी ट्रेंड है, बट अगर मैं अभी स्टार्ट करी तो मैं नहीं करती हूँ. अभी वही कंपेटिटिव बहुत है, बी इतने स्केल ऑफ इवेंट्स नए न्यू बिगिनर के लिए इतने नहीं होते. मोटिवेशन मुझे तो आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि हम स्मॉल स्केल शादियों पे जो आए हैं, अब उसको आप खुदा की नेमत कहें या अजाब कहें, वो कोविड की वजह से है. कोविड में लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, 10,000 लोगों को शादी में बुलाने की जरूरत नहीं है, 50 अपने खानदान को बुलाओ, शादी हो सकती है. एग्जैक्टली. तो कोविड एक नेमत थी एक तरह से, लेकिन ऑब्वियसली यू बीइंग इन दिस मार्केट, आई रियली वांट टू नो कि उस जमाने में सर्वाइव करना हाउ वाज इट? Yeah. So, see, survival का तो force वो तो alhamdulillah like हुआ है, but business survival, yes. Business survival, I'm obviously I'm not talking about survival. I'm sorry, yes. No, so yes, business survival was tough. So it's a really good question though, because COVID times में हमें बहुत ज़्यादा business हमारा सबका ही in fact hit हुआ था, but event planning was of course with the top most, because you know सबसे पहले था event ही नहीं हो रहे थे, social gatherings ही banned थी, you know.
But I think like you said उससे ही काफी लोगों ने SOPs थे और SOPs के अकॉर्डिंगली ये था कि आप इवेंट्स कर सकते हैं बट लिमिटेड हो ऑफ कोर्स सो अपने घरों पे हो एंड मास्क हो टेबल सर्विसेज हो सो उसके थ्रू हमने इवेंट्स करवाए हैं you know so covid में ऐसा नहीं था कि हम बिल्कुल we were like shut down or locked up or whatever so चल रहा था but of course events were like pretty downscale होके और घरों पे with some social distancing उसके through जो है वो किया है but it was a tough period. It was a very tough. Yeah. So I mean post COVID हमने एक ट्रेंड देखा वो इवन अपर मिडिल क्लास ने भी उस ट्रेंड को अडाप्ट किया कि जब लो स्केल लो बजट में शादी हो सकती है और फिर वो वही सेम बजट हनीमून और दूसरी चीज़ों पे लगाएं तो has it impacted your business? So yes, definitely Zen. I think post COVID clients के budgets वैसे नहीं रहे जिस तरह के pre COVID थे. Definitely of course budgets तो कम है and also frequency of events and the nature of events and the scale of event is also has also like scaled down. Like लोग अब 50 लोग के event होता है 100 का होता है debate काफी होने लगे हैं. But then हमारी side पे भी of course to cut down on costs हम काफी ऐसी चीजें जैसे for example हम pre-COVID बहुत ज़्यादा fresh flowers में काम होता था but now we've also like gone to use imitation flowers हम imitation flowers पे काम करने लग गए of course थोड़ा बहुत innovation थोड़ा कम हो गई है थोड़ा सा repetition हो गया है stage design although like I haven't repeated any of my stage designs yet but of course like market में furnitures and suppliers ने like rather than हमेशा हर season से पहले सामान जो है वो चेंज होता था बट पोस्ट कोविड सामान जो है वो pretty much उतना ही रह गया because everyone of course has to cover their cost तो अभी तक वो cost covering चल रही है. तो कभी कोई ऐसा क्लाइंट आया जिसने बहुत ज़्यादा तंग किया और तो कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही हो? ऐसा समझ तो नहीं ऐसा नहीं होता because I think मेरा majors HR था so I was like pretty much मैं थोड़ा people skill is good so convince कर लेते हैं client को definitely and I think मेरे पास मेरे वही clients आते हैं जो जिनको my style of work जिनको पसंद आता है so people who like my style of work likes to go ahead with doing an event with us so उनको इतना समझाना मुश्किल नहीं होता because they like what I do and that's why they approach us yeah so ये तो नहीं होता हाँ execution में कभी कभी होता है but very minor though कि कभी होता है कि आप ऐसा या ऐसे कर लें I listen to their suggestions of course because that's a part of our job but pretty much they agree to of course what we have to say and at times of course we also have to agree with what they are saying. मैं ये आपको एक सजेशन दे रहा था बाय द वे बिजनेस सजेशन कि आप लोगों के ना बेबी शावर से उनकी शादी करवाएं फिर उनके बच्चों के बेबी शावर करवाएं उनके जेंडर रिवील करवाएं और ये सारी चीज़ें कराएं और फिर पूरी ज़िंदगी के लिए अपने साथ लॉकडाउन कर लें ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें. That's a good idea actually but honestly Zed वैसे ऐसे clients हैं हमारे पास जिनके हमने bridal showers भी करवाए हैं engagements निकाह receptions and then उनका बेबी शावर्स एंड उनकी बेबी की फर्स्ट बर्थडेज है ना अब ऑनेस्टली हमारे एक क्लाइंट की तो बेबी का थर्ड बर्थडे तक अभी तक हम उनके साथ है तो व्हिच इज गुड लाइक ऑफ कोर्स लोगों को याद रहता है ऑफ कोर्स बिकॉज उनको एक्सपीरियंस अच्छा मिला होता है सो दे ऑफ कोर्स दे वांट टू गो अहेड अगेन. तो स्पीकिंग ऑफ बेबी एंड बेबी शावर यू हैव रिसेंटली बिकम अ मॉम माशाल्लाह से तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस कि बच्चा बिजनेस कैसे दोनों साथ देखा किया? अच्छा वैसे ओके सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दो सो मेरी डिलीवरी दिसंबर में ड्यू थी एंड दिसंबर इज आल्सो द पीक वेडिंग सीजन सबको पता है राइट my clients they were like oh हो जाएगा of course like everybody I was expecting and honestly like हम मूवीज में वीडियोस में तो बहुत देखते हैं कि people are like expecting and they're also working and all but real life में I've not seen like a lot of women doing this. I was the day I delivered the C के morning में I had a meeting मैं meeting करके आई meeting करके I went to my house and घर पे मैंने सबको बोला कि यार I just wanna like feel like going to hospital just for like a random checkup and all and वहाँ गए
मैंने डॉक्टर को I told her I wanna, I'm not sure if we can say this, but I think so. मैंने डॉक्टर को बोला कि I'm not gonna go for anything else than natural delivery because मेरे इतने events थे. मुझे नेचुरल करना है because उसी एक हफ्ते के अंदर में इतने बड़े events थे. Like I can't afford to do any C-sections and all. Unfortunately, I had to go for C-section and मैंने करवाया भी and उसी एक हफ्ते में जो मेरे events थे, I went to those events also. मैंने वो events भी किए. Of course, my clients didn't know कि ये सब of course why because it's something personal of course. But well, and my baby Nile actually is his name. So he's also like not one of those kids जो बहुत रोते धोते हैं. That's what I mean. He's very nice. He's very like manageable. So I'm not around most of the time. But हो जाता है. My parents are there. Then my husband's parents are there. So they're pretty supportive and alhamdulillah. Like speaking of your husband, वो कितना supportive है? Oh, Faisal is very supportive, of course. So I think it's because of him that 360 events has reached where 360 events is, and we do it together. By the way, not a lot of people know this. But nice, you've disclosed that information. I already knew that. But चलें. yeah. चलें जब जिनको Yes. नहीं पता उनको पता चल गया. Yes. खैर, तो Aiman, you were doing events in Pakistan. Yeah. तो तू जैसे मैंने बाहर के फोटोग्राफर्स को देखा कि उनको होता था कि वो कर तो यूएसए में रहे हैं, कनाडा में फोटोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन किसी ने अगर क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग रख ली तो उनको फिर कनाडा से कॉल किया गया कि भाई आप आके हमारी जो है वेडिंग वहाँ पे आके शूट करें. Yeah. तो एज एन इवेंट प्लानर तो मैं कहीं बाहर बुलाया लोगों ने कि भाई इधर आ जाओ हमारी शादी इधर. So destination wedding की queries बहुत आती हैं, even within Pakistan. So northern areas में like I always wanted to do that but नहीं कर पाया यार. इतनी अच्छी होती हैं डेफिनेटली. सो हमारी लाइक लीडिंग एक्ट्रेस आई थिंक मायरा खान की भी वहीं पर हुई है. सो अप नॉर्थ इज ब्यूटीफुल. सो वहाँ के definitely views and it's beautiful to get your wedding done there. Even like of course बाहर से भी queries आती हैं but since I make sure मैं planning के साथ साथ execution में भी I want to be there on the ground. So we've not like taken any event as such बाहर but we've expanded to UAE actually. Oh nice. Yes, Mashallah. very recent. What made you do that? So again, since I was a business student too, so of course I was reading like market trends, and like we were discussing here only कि Pakistan में post COVID बहुत of course recession है. People do not have that much budget and all. So of course business को थोड़ा सा grow करना था and alhamdulillah I think Pakistan market में तो saturation भी है and of course we've also like reached a point I think हमारे एक अच्छा peak पे थे. But we wanted to, of course, explore more and do more. So, see, process में, I think UAE was definitely it was our target. हमारी वहाँ पे बहुत potential customers थे. हमने वहाँ पे tap किया and rightly so, alhamdulillah, I think we've done quite many events there. And alhamdulillah, like big scale और अच्छी शादियाँ वगैरह हो रही हैं अब. तो I think it's been a year and it's going really well. तो वहाँ पे शेख तो पैसे लुटाते हुए वो टेंशन नहीं होती होगी? Actually, yes. वहाँ पे Indians and yes, Dubai, I mean Emiratis. So Emiratis and Indians, they do spend a lot of weddings, yes. Clientele कितना different है पाकिस्तानी clientele and the UAE clientele? देखो यहाँ पे ज़ैन हमने जितना काम किया है यहाँ पे pretty much आपके mood board still अभी थोड़े limited हैं. Of course like यहाँ पे काम कुछ planners तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके mood boards उनके designs भी लगते हैं of course new. But वहाँ पे मैंने अभी तक जितने events किए हैं each event has a huge sort of mood board and a lot of room to play. Basically हर event चाहे छोटा बड़ा हो Pinterest यूज करते हैं. Clients are so involved. खुद से अपना mood board बना के आते हैं and they exactly know their color palettes, floral palettes, proportion of the florals, placements. They're very informed of course. So यहाँ पे भी हैं ऐसे clients जो बहुत ज़्यादा खुद से mood boards बनाते हैं, सब करते हैं.
आप वहाँ पे हमारी काफ़ी मीटिंग्स होती हैं, फिर इवन वहाँ पे हमें फ्लोरल सैम्पल्स बनाने पड़ते हैं इवेंट से पहले. सो फ्लोरल सैम्पल्स बना के भी दिखाना पड़ता है कि you know, see, this is the kind of floral you will end up getting on the event day itself. So, but of course, but वहाँ पे it does make sense also because they in the end they are paying, you know, a lot. I mean, if you compare it with the Pakistani audience, and यहाँ पर of course कि आपको इतना नहीं leverage होता because budgets भी of course so normal होता है. ठीक है. I mean, so as a businesswoman, right? Yeah. Society, unfortunately or fortunately, we don't like, you know, have to be politically correct. Yeah. तो expects women के यार हाँ वो खाना पकाए and everything. To be a certain way, yeah. So are you like that as well? Like, can you cook? Do you know how to cook? Yeah, I cook really well. Do you cook? Yes. Every day? No, not every day. Not every day, yes. But I cook really good. So अभी रमज़ान थे तो मेरे रमज़ानों में जो है वो every day हमारे घर में ये थोड़ा sort of like एक tradition है मेरे in-laws में कि हमें हर दिन we have to bring one dish. One dish party. And yes, और वो dish होती है like you need to cook it खुद से. So definitely I do it and बहुत अच्छा बनाती हूँ खाना. So वो भी कर लेते हैं. And actually when I got married, so शुरू में थोड़ा problem हुई थी. Yeah, so I took like 1 year's gap मैंने लिया था because not like in immediate people, but then of course कुछ लोग उनको होता है कि भाई like take some break and maybe not do it, it's not needed. सब कुछ तो है, you know, just chill and be in the house and housewife बन जाओ सब. हाँ, so I tried doing it honestly, but it was taking a lot to be that certain way. And then my husband actually he came to me and said कि नहीं भाई, if you like I can't see you like this. You gotta be the way you were before. और बस तुम जैसे पहले थी वैसे करो. And if this is something that you know makes you happy, do it. So I think. So your husband has been like your pillar of support, I believe, yeah? Yeah, and also like of course my immediate family members and his immediate family members. उन्होंने कभी ऐसा कुछ you know नहीं किया. But yes, I was the first one from his family to you know get into the business world. But you've never done like a job, right? I did actually. You did? Yeah. So after I graduated, I was again I won't take names, but I was in a very nice reputed company, and I was a media planner for a leading FMCG brand, and I can take names. Yeah. So I was the media planner of P&G. And Head and Shoulders and Pantene and were under me, and I was planning it on in this Zedtalks. Okay, so you would. अच्छा ये तो मेरी knowledge में इजाफा हुआ है. Yeah. So you were doing a job. Yeah. And at the same time you were managing Yes. Whoopi. Yeah. At that time It wasn't that big. Yeah. But it was Whoopi, right? It was Whoopi. Yeah. 360 events हुआ शादी के बाद. शादी के बाद क्योंकि तो 360 लाइफ चेंज हो गई ना तो फिर वो Whoopi ही नहीं रहा वो फिर 360 events हो I think गया. काफी लोगों को पता नहीं पता ये भी के बीच में मैंने my husband and I we also rented a shop in BHA phase 8 की तरफ. हमने वहाँ पे 360 events को एक उस वक्त हमने इसको 360 by Whoopi के नाम से एक शॉप खोली थी एक्चुअली. उसमें the idea was basically to have every sort of decor item under one I've seen umbrella. a lot of those in defense now. Yeah. So उस वक्त हमने काफी किया कि उसमें giftings भी थी and then flowers थे, imported flowers थे, there were cakes and you know one bite chocolates and assorted chocolates and all. So pretty much वो किया and I think we did that for a year also. तो उस वक्त भी हम event planning भी कर रहे थे साथ. But of course that didn't turn out to be too. Okay. अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता, especially after COVID. Yeah. एक तो हमारी करेंसी माशाल्लाह अल्लाह माफ करे माशाल्लाह बोल रहा हूँ सॉरी लाइक काफी नीचे आ गई है. Oh yes. तो अब जो हम चीज इंपोर्ट करते थे फर्ज करो 100 रुपए की अब Yeah. हमको 300 रुपए की पड़ रही है. Yes. जिसकी वजह से तुम्हारी भी प्राइसेस ऊपर गई होंगी. Yes. In terms of के एक इवेंट जो तुम फर्ज करो अगर तुम Yeah. 1 लाख का कर रही थी Yes. अब वो तुम 3 लाख का कर रही होगी. Yes. और लोगों को ये लगता है अरे नाम बन गया ना तो देखो अब इनके Yes. 7 क्लास वाले पहुंच गए. Yes. उनको ये पीछे बैकग्राउंड नहीं पता कि Yeah. भाई ये प्राइसेस ऊपर हुई हैं. Yes. तो
इसकी वजह से इम्पोर्ट चीजें जो हो रही थी तुम अभी तक वो कर रही हो या फिर तुमने कहा कि यार इम्पोर्ट पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए? सो बेसिकली हमारा जो इवेंट प्लानिंग बिजनेस है उसमें मोस्टली इम्पोर्टेड स्टफ तो उतना नहीं होता. सो हमारे फ्लावर्स ही होते हैं जो ऑफ कोर्स वो इम्पोर्टेड होते हैं. नहीं पेट्रोल के पैसे भी तो ऊपर हुए ना. हाँ, like as in yes. So पेट्रोलिंग से डेफिनेटली हुआ है. So I'll give you an example. हमारा अभी एक इवेंट चाहे जितना भी स्मॉल स्केल हो या मीडियम स्केल हो उसमें हम एक 60 kVA का जनरेटर रेंट करते हैं. सो वो पहले फॉर एग्जांपल अगर आता था 15,000. सो अभी जस्ट जनरेटर विद फ्यूल जो चाहिए होता है ऑफ कोर्स बिकॉज मोस्टली लाइक जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे जनरेटर्स नहीं होते हैं. अभी वही जनरेटर विद फ्यूल इज 35,000. You know, so definitely. And then of course fuel के increase होने से definitely काफी चीजें उसमें factor तो है. So yeah, this is a problem. अच्छा, a lot of people don't know this, but जब मुझे भी नहीं पता था जब मैं अपने शादी का हॉल बुक कराने गया and everything, then that's when I realized कि हॉल बुक करना एक बिल्कुल अलग बॉल गेम है. उसका डेकोर जो अंदर होगा वो एक अलग बॉल गेम है. Yes. तो वो हॉल वाले भी प्रोवाइड करते हैं, राइट? This is actually a very good question and इसी से related I think you're right. So यहाँ पर काफी लोगों को I think नहीं पता होता. डेफिनेटली आप हॉल बुक करते हैं बट हॉल के अंदर जो भी चीज होती है वो आपको एज इट इज generic serving आपको yes they do by the way have their floral teams also. So वो आपको खुद भी उनको एक ऑप्शन देते हैं कि आपको खुद हम आपका फ्लोरल करते हैं वो भी होता है. बट इवेंट प्लानर्स बहुत कम हॉल्स हैं जो अलाउ करते हैं इवेंट प्लानर्स को काम करने के लिए. सो आपके जहाँ पे हुआ होगा आई थिंक वहाँ पे अलाउ कर दिया होगा. तो कुछ जगह पे अच्छी जगह पे होता है. एंड बाय द वे हमारा ज़्यादा हंसे नहीं लोगों को बता देते हैं इन्होंने किया था मेरा तो इसलिए इतना हंस रही है मुस्कुरा रही है. ठीक है. So exactly आपका हॉल था it was a nice hall. So वहाँ पे बड़ी अच्छी बातचीत थी. तो वो they let us work there. Back in the day was it like this या फिर जब हॉल वालों को समझ आया कि यार ये तो एक डिफरेंट मार्केट है इसको हम कैप्चर कर सकते हैं? शुरू से ऐसा था. Yeah, they don't let planners work. बहुत कम like आपको PF की जो कन्वेंशन अब तो मार्कीज बंद हो गई हैं बट वहाँ पे वो सारे हॉल्स वगैरह पे वहाँ पे काम करने देते हैं. बट ये जो प्राइवेट मार्कीज है वहाँ पे नहीं करने देते. बट टू बी ऑनेस्ट वैसे जो मेरी मार्केट है सो वो हॉल वाली मार्केट नहीं है. एग्जैक्टली मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि what do you enjoy the most? ठीक है. A hall किसी के बैकयार्ड या कोई फार्म हाउस करवाए या कोई बीच पे करवाए तो अगर तुम्हें पता चले कि यार ये वेन्यू है तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट करे? Not hall definitely. Because definitely I think as a creative person I think any creative person would agree we like our canvases blank and then we would like to fill it as we want it. So मुझे भी अब ना of course हम हर प्लानर को पसंद है. We like lush green gardens and हमें garden में backyards I think great. ये जो अभी ट्रेंड आया पोस्ट कोविड it is amazing. So आप जितना आप जितना हॉल में पे करते हो और उनकी सॉरी फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड चीजें ले रहे होते हैं उसमें या कभी उससे कम में आपको एक प्रॉपर अच्छा आपके अकॉर्डिंगली थीम्ड वेडिंग थीम्ड एंगेजमेंट थीम्ड सब कुछ वो मिलता है which is great. बैकयार्ड के अलावा भी बीचेस डेफिनेटली love working there also but बीच पे काम करना is very tough. Exactly मैं यही अभी आ रहा था कि बीच पे बेचारी दुल्हन का क्या हाल होता होगा कि हवा नहीं चलती है उसका तो बाल ही खराब हो जाते हैं. Yes हवा तो दुल्हन के बाल के साथ भी हमारी टीम्स के लिए भी बड़ा मसला होता है. I think जितने अगर इवेंट प्लानर्स देख रहे हैं so बहुत मुश्किल होता है. अब हमारे तो स्ट्रक्चर्स लगते हैं ट्रसिंग्स लगती हैं पैनल्स होते हैं. पैनल्स को स्टिक करना बिकॉज वो बड़ी pretty windy, you know, so वो सब तो challenge है. बीच में काम करना is very tough, but also of course it's really fun also. It's challenging but it's fun. Challenging is fun, yes. By the way तुमने हॉल को सबसे लो रख के ना हॉल की मार्केट बंद कर दी है. हॉल वाले तुम्हें बैन कर देंगे कि ये नजर ना आए. ठीक है. No, it's not कि बहुत अच्छे हॉल्स भी हैं. हमारे पास काफी अच्छे हॉल्स भी हैं जो कि काम भी अच्छे कर रहे हैं और उनके सेटअप्स भी अच्छे हैं. It's just that as an event planner, of course, I will prefer, getting an event done in in a garden area or at a backyard.
Okay, so I have seen like Indian weddings and everything ना, Yeah. तो उसमें जो इवेंट प्लानर होते हैं वो तो ब्राइडल कॉस्ट्यूम तक भी उसमें उनकी इनपुट होती है. yes. तो यहाँ पे Yes. कुछ ऐसा I client think तक रहा है. that's a really nice observation. This is really smart of you to observe this because ये हमारा ये एक जो difference है ना वो UAE market में भी है versus Pakistan. So UAE में हमें proper they hired us for wedding coordination also. So we've done like coordination of weddings there as well. So अच्छा वैसे यहाँ पे तो हमारे free में हो जाता है कि आप कि इतने close family members होते हैं आपकी friends, आपके cousins, आपके वो तो वही आपके लिए coordination करते रहते हैं. But वहाँ पे of course like they hired people to do it. So वहाँ पे आपका dress, yes. आपका proper sequence of event, आपका like everything they want from the scratch from your event planning company, which is good, which is great. Very good. But Yeah. यहाँ पे मसला ही है ना कि ससुराल से आता है ना ड्रेस तो इवेंट करने की कहाँ से चलेगी. इधर तो चाहे लड़की बात नहीं चल रही होती ससुराल की चल रही होती है. Yes. तो अच्छा अब आजकल के ज़माने में हम ये सोचते थे कि भाई जो हमारे ऐसे लड़के हैं फिलहाल अल्लाह का शुक्र हमारी तो टाइम पे शादी हो गई. यहाँ बेचारे कोई लड़का शादी करने जा रहा हो तो पहले हम ये सोचते कि यार हम घर नहीं खरीद सकते Yeah. क्योंकि अभी औकात नहीं है, औकात से बाहर हो गए घर. फिर अब माशाल्लाह गाड़ियाँ भी औकात से बाहर हो गई हैं और अब ऐसा लग रहा है शादी भी औकात से बाहर होती जा रही है. ठीक है क्योंकि बहुत अब आप एक आइडियल शादी जो होती है Yeah. ठीक है Yeah. कि दैट इन माइंड उसमें ड्रेस एंड एवरीथिंग और ये सारी चीजें ठीक है. Yeah. तो वो कितने तक की पड़ जाती है एक फैमिली. Oh, I think dress को हटाते हैं because चलो, ठीक है, आजकल चलो. तो dresses ही हाँ 5-6 लाख की कहानी है. No, it's way higher than that. चलो मेरे जमाने में 5-6 की थी भाई. चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. अब तो काफी as in आप अच्छे डिजाइनर्स पिक कर ले 10-20 लाख तो आपके ड्रेस में चले जाते हैं पर इवेंट. And then आप अगर पर इवेंट की बात करें I think sky is the limit. Recently a friend of mine got married, Yeah. right? And he had like 7 events. Yeah. My वैसे God. this is pretty normal though ना. Okay ठीक है like yeah but देखो ये मिलाद हो गया, मेहंदी हो गई, माहियो हो होता गया. है, then there's nikah, Yeah. engagement, ये- then of course शादी. Oh 9 events वलीमा, yeah, he had 9 events yeah. कवाली. Yeah. Recent trend अब तो कवाली. Oh by the way अब तो और भी trends हो गए. So there is game night. There's DJ night too apparently. DJ night? Yeah, he's done हाँ. like उसने अपनी शादी पे DJ night की थी. Yeah. मैं उसकी शादी अटेंड नहीं कर पाया, Yeah. मैं लाहौर गया हुआ था but Yes. yeah तो like शादियां तो हमारे बजट उससे बाहर होती जा रही हैं. Yes. Oops. तो इसीलिए लोग जो है ना बेचारे मिनिमलिस्टिक अप्रोच पे चले गए हैं कि बस हाँ. आराम से छोटी मोटी शादी हाँ, करें. which is good. I mean, I love simplest weddings. But एक बहुत interesting, I think हमारे पास सबके पास ऐसे clients आते हैं like they start off saying कि हमें बहुत simple wedding चाहिए और इसको बिल्कुल like simple सा रखें. I don't want to you know go do like a grand sort of wedding and all, which is like okay. But then जब भी simple weddings भी जब you know they start explaining the simple weddings design to us, तो वो भी definitely इतना elaborate हो जाते हैं. Then of course we have to like tell them कि भाई this isn't simple. Simple is कि आपने chairs and tables लगा दिए, stage लगा दिया. But this is I think that's good for us. चलो वेरी नाइस. और फिर तुम्हारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स भी आते होंगे जो बोलते होंगे कि हमें बहुत कुछ चाहिए ठीक है सब कुछ ये चाहिए वो चाहिए उसके Yeah. जब बजट की बात आती है तो वो फिर बोलते हैं ये तो नहीं चाहिए. Yes. So हाँ ऐसे कुछ ambitious clients होते हैं definitely. I think अभी हमारे साथ recently बहुत एक client थी. So her mood board was a lot. So it was very heavy mood board. उसमें आप अगर उसके सिर्फ पेजेस देखते ना बहुत ज़्यादा थे. So I think अगर वो हो जाता execute तो definitely like you know out of the world sort of situation होती. So even like while we were preparing the code we knew that this is not going to happen but we prepared it anyway you know because definitely like उसमें बहुत कुछ था. But now she has got it back to us. Actually not her dad has got it back to us saying कि थोड़ा इसको कम करो, let's just cut few elements, and of course we did that way because देखो we understand like आप I think event planning process ही ऐसी होती है कि we want to start with what
client has in his or her mind, and then we give them a budget, and then they see, oh, okay, wait, इतना है, इसको कैसे ऊपर नीचे करना है, let's just cut few elements, let's just tweak this around or whatever. And then जो पता चल जाता है कि this is the budget and all, then of course we do it accordingly. बस तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया कि एक शादी एक लड़का जा रहा है, अगर हॉल बुक करा के उसको कितने की पड़ जाएगी, एक डे का इवेंट बता दो. Just the decor? Just the decor, hall, चलो hall included. Hall and decor. कितने लोगों का इवेंट है? Because it depends a lot. मैं मेरे पीछे जो खड़ा है सभी में उसके लिए बात कर रहा हूँ. 500 लोगों का इवेंट है, चलो. Oh, 500 का है तो देखो, definitely I think you keep in mind approximately like 12-20ish. 12 to 20ish. Yeah, or you can even do like 10. I mean, again, Zen, I think अच्छा by the way ऐसे भी कुछ होते हैं से उनको होता है कि आप budget फौरन बता दें. But event planning isn't like that. Honestly, so I'll tell you कि ये बहुत different process है. So ये नहीं है कि आपको अच्छा ये शर्ट अच्छी लग रही है, कितने की है, बता दिया. So या आप चलते गए और आपने जो है वो एक property whatever कितने का है बता दिया. Event planning में each element has a cost. So हम इसीलिए start करते हैं, या तो फिर हम client से ये बोलते हैं कि either you give us what decor you have in mind or you give us the budget. And then you work in that budget or in that sort of space only, So pretty much अब यही 500 लोगों का जो event है. So ये अगर वो कहें कि when we have a budget of say around like 9-10, so we can give them options for that also. हाँ, उसमें आप फिर हॉल भी ढूंढ लिया और ये सारी चीजें कर ली, और अगर वो 20 लाख का बजट देते हैं आपको तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें. Exactly, because options are काफी सारे. जो भी भाई अब जाएंगे इधर 360 इवेंट्स में तो पहले ही आपने बजट रख देना कि ये हमारा बजट है, आप इसके अंडर काम करें. अच्छा इतना भी बात सॉरी पर इतना भी like reasonable budget, let's just say reasonable. I wish you all the best, Aimen. Thank you. Thank you so much for coming. God bless you. Thank you for calling. This is a really fun interview and a very I think casual sort of thing. Yeah. So I wish you all the best in your future endeavors. Thank you. और फिर इंशाल्लाह we'll stay in touch. Yeah. और अगर कभी मैं वापस आया तो फिर दोबारा इसको करेंगे, और इंशाल्लाह फिर तुम 360 इवेंट्स जब कनाडा खोलोगी ना तो कॉल मी अप. प्लान है वैसे. चलो डन. आपको इन्वेस्टर मिल गया. yes, plan है वैसे. Thank you, Zen.